Today we are going to learn about the MySQL server. MySQL server एक डेटाबेस सर्वर है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेटाबेसेस क्या होते हैं। तो डेटाबेसेस are the collection of a data organized in table with row and columns. जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर शो हो रहा है, यहाँ एक स्टूडेंट का टेबल है और स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास डिफरेंट डेटा मौजूद है कॉलम्स की सूरत में, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, कोर्स. These all are the columns. And then there are the records of a one student. For example, there is a student named Rafe. So ID is 001, name Rafe, father name Ahmad, course name CH. So this is a complete record of a student. So this is an example of a database. You might have familiar with this kind of the structure in the Excel as well. So now to interact with the databases, जब databases के साथ data extract करने के लिए हम SQL use करते हैं. SQL stands for the structured query language and is used to interact with the databases and manipulate the data such as inserting data, deletion, updating, etc. SQL का एक simple syntax इस तरह से select का statement होता है, जिस तरह से अगर हमें इसमें से नेम और कोर्स की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो तो एग्जाम्पल सिंटैक्स होगा कि सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम. फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट नेम कॉमा कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट. नाउ MySQL is the database server or database software. MySQL is an open source relational database management system. MySQL stores data in table made up of rows and columns just like in above examples. Users can define, manipulate, control, and query data and from this. Just one quick an example, interesting fact. The MySQL name is combination of the May. So May is the basically the name of the daughter of the MySQL founder Michael Whitney's daughter, and the SQL is the SQL. So this is what the how it becomes the name of the this product. Now is to start with this इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें अपने एसक्यूएल MySQL सर्वर को अपने Ubuntu के सर्वर में जाएंगे और जहाँ पे इस कमांड के थ्रू हम अपने MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं. So to install the MySQL server, we'll start writing the command like sudo apt install MySQL-server. So it's asking us to yes or no. Yes. So this is how the MySQL server has been installed in our system, right? So going back to our notes, we can start and stop the MySQL instance by using the standard systemctl command to start MySQL or stop MySQL or to restart MySQL, right? So for example, let's go to here. The MySQL is already starting up. So it is already started. So if I type here, so to start and stop and MySQL server, we use the command systemctl stop MySQL. So now SQL service is now stopped, and if I would like to restart again, so sudo systemctl start MySQL. It will take a bit time, and then MySQL server will be started. So we use the standard commands of the systemctl to start and stop the MySQL services. The default configuration file is available in etc mysql mysql.config.t and the mysql.conf. Well, it's usually not required to change anything here, but if it is required, then you can do and change the things here. But make sure to make a copy of it before making any changes, right? So now, how to log in into the MySQL server?
So you can use this command as a root to log into the MySQL server. MySQL space u root space dash p. MySQL dash u root dash p and just make a sudo. Enter password. And here you go, enter the MySQL server. So now you are in the MySQL server and you can do different stuff here. So for example, if you would like to create a new database here, we can create a new database. Right now it's completely empty. Right? So we can create a new database with this syntax, create database name. So if you would like to create a new database of the student databases, so we'll use this command. Pardon me for the spelling, but here to create database and student DB. So create database student underscore DB and semicolon, enter. Okay. Query okay. Show database this database. Show databases. So you can see that how many databases are there. So these all are the other databases names are the default databases, and this one, the student DB, is something which we have created recently. So we can show see the how many databases already available in the MySQL server, right? So after creating the database, we use the database and we have to start using this database. So database को use करने के लिए we have to use the command use space and database name. So use and our database name is student underscore DB and the current database has been changed. Okay. Now we have to create a new table here in this database. So table create करने के लिए जो command है वो इस तरह से. So ये सारी SQL statements की commands हैं. So create table is the command is the create table and then table name and then column 1 data type, column 2 data type, and how many it depends on how many columns you would like to create. So for example, in our example, which is here, like ये जो example है, हम अगर इसी को follow करें, so in this example, 1, 2, 3, 4. So student ID, name, father name, and course. So if you would like to create the similar table in our database, so we'll use this kind of this statement here. Create table and table name. We'll give the table name student and then bracket start and then first column name, which is student ID, and then the data type of it. So this student ID is the number field, so we'll give it the integer data type. Integer is the number field. Then the second column is the student name, and then we'll give it to the varchar 255. Varchar is the text type data type. Similarly, for the father name, we'll give the varchar 255. 255 is the length of the maximum length of the varchar which we can give. You can use the reduced number as well, for example, 20, 50, and whatever you would like. And similarly, the last column is the course and the varchar. So we'll use the same syntax or the same command in the SQL to create a new table here. Okay. We'll So to create a table, we'll type create table, table name is student, and then bracket start, and then first column name student underscore ID space int comma and then enter, and then you can write in a same line as well, but just for the neat and clean thing, we just going into the news line as well. So the next is the student underscore name space varchar 255 comma
third is father underscore name, varchar 255, comma, and then last is course and space varchar. Sorry for this mistake. Varchar 255. That's it. And then bracket close. This bracket has been closed, and the semicolon and enter. Okay, so one table has been created. So let me see if there is a command of show tables. So we can see the show tables command will show you how many tables has been created. So we have the one table here named student. Okay, it has been created. Student, but this table does not have any data in it right now. So उसमें data enter करने के लिए हमारे पास insert into key command है. And for the insert into command, we'll use the syntax, the insert into and the table name, and then bracket start, and then the column names, for example, student ID, comma, student name, comma, father name, comma, course, and then bracket close. Then we'll give you the values, and then bracket start, and then we'll write the value of the each column. Uh, for example, student ID, just as an example, 1431, and then student name, father name, and the course name, right? So this is how we can insert the data into the databases or in our tables. So we'll write these things, insert into student, and then student underscore ID, comma, student underscore name, comma, father name, comma, course. Okay. And then enter, and then values, and then bracket start. The first value of the student ID, so any value which we can give, for example, 1431, comma, any student name, for example, Ajay Kumar, and then student father name is anything, Ramesh Kumar, comma, course name, and Linux administration, bracket close, semicolon, enter. So one row affected. Okay. So now if we do the select statement, we would like to extract the data which we have already inserted into the table name. जो टेबल में हमने डेटा इंसर्ट कर दिया उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए we'll give the select statement. Select static means all the tables, all the columns, static from student, semicolon, enter. And here is our record, right? So let's suppose अभी हम एक टेबल एक डेटा और इंसर्ट करते हैं. So for example, insert into student underscore ID, comma, student underscore name, comma, father underscore name, comma, course, bracket close, values. Now values will be different for this record. For example, 1501, comma, and student name, for example, Adil Khan, comma, and any name, Amir Khan, and course name, Python. Yeah. Okay, comma, bracket close, semicolon, enter. So one row affected. Okay. Now we'll do again the select statement, select static from student. So it will give us the two columns, two rows. You see, not the two rows. So इस तरह से हम
डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है. If you like to go to if you like to learn the SQL statements, there is a very good site of the w3school.com. You can go there and learn more about the SQL statements as well, right? So this is how we create and records and insert the data and उसको हमें जाके हम चेक कर सकते हैं. Now, further, we can also create the users as well. Right now, we have using the our MySQL database with our default root administrator. लेकिन अगर हम उसके अंदर different users create करना चाहें तो हम उसमें different users भी create कर सकते हैं. For example, if we would like to create a new user, we can use this command to create a new user. Create user, username @ localhost and identified by the password. ठीक है. So let's try it. और फिर उसके बाद उस यूजर को कोई भी परमिशन देनी है तो हमने उसको स्टैटिक और स्टैटिक तमाम परमिशन हम उसको ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है. So for example, let's create a new user here with this command create user and then the यूजर नेम जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें @लोकल होस्ट मीन द लोकल डेटाबेस जो कि हमारा लोकल सर्वर है उसके ऊपर. सो हम यहाँ पर आप एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल न्यू यूजर अजय एंड लोकल होस्ट एंड आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड. पासवर्ड जो भी उसका हम सेट करें. For example, ABCD 1 2 3 4, simple password, and then it in real life it should be the complex, but right now I just have choose the simple password and enter. Okay. There's an enter syntax. I create user. Sorry, create user. Give a simple state. Sorry for the typo. User, create user, J @local host identified by CD 1 2 3 4. Password in production it should be the complex, but right now I've just given it a simple password. Okay. So the user has been created, and if you would like to check the whether the user has been created, user create हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए हम select user from MySQL dot user. So यहाँ पर हमारे पास सारे users की list आ जाएगी, and we can see a new user Ajay has been created, right? So to grant the access to the new user, we can administrator level access. We can use this command grant all privileges on static to username @localhost. Okay, so we'll use the same command on the grant all privileges on static to user J @localhost. Okay, and semicolon. So this will grant the all privileges to the new user which we have created. Now we'll do the exit from the user, and we'll log in with our new user which we have created. Okay. So for this we'll do the same thing. MySQL dash u j and dash p means password. सो जो पासवर्ड हमने यहाँ पे रखा था ABCD 1 2 3 4 वही हम देंगे ABCD 1 2 3 4 सिंपल पासवर्ड. एंड नाउ वी हैव लॉग इन विद द न्यू यूजर अजय.
सो इस तरह से हम डिफरेंट यूजर्स क्रिएट करके हम लोगों को प्रिविलेजेस और एक्सेस दे सकते हैं अपने माई एसक्यूएल के ऊपर। चेंज यूजर्स पासवर्ड इज द सिंपल कमांड कि हम यूजर का पासवर्ड चेंज करना हो तो हम वी कैन डू द ऑल्टर यूजर एंड द यूजर नेम एट द रेट लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड द न्यू पासवर्ड, तो उससे यूजर का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। This is a simple thing, and the next important thing is the how to take a backup of the MySQL database. So for doing this thing, we can use this command. So उस कमांड के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास MySQL dump dash u username dash p and then database name and किसी भी फाइल का नाम हम जैसे बैकअप डॉट एसक्यूएल, तो उससे हमारे पास सारा एक डंप क्रिएट हो जाएगा। सो माई एसक्यूएल डंप और फिर उसके बाद डैश यू के बाद हम यूजर नेम जैसे हम अपना रूट के यूजर को यूज कर सकते हैं, या अजय का जो हमने यूजर बनाया है अगर उसके पास परमिशंस हैं तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो सम और इसका हम जाके हमने एग्जिट किया और जाके हम अपनी कमांड देंगे माई एसक्यूएल डंप माई एसक्यू सॉरी माई एसक्यूएल डंप डैश यू रूट डैश पी और डेटाबेस नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी, राइट। एंड देन फिर हमने कोई भी ग्रेटर देन का साइन देके और उसका कोई भी फाइल नेम दे रहा है जिसके अंदर हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डेटाबेस। तो हम यहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल डेट डीबी अंडरस्कोर बैकअप डॉट एसक्यूएल, राइट। एंड इसके शुरू में हम इसको सूडो लगा दें तो बेहतर होगा, राइट। तो ये हमसे डेटाबेस का पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम जो रूट का पासवर्ड है वो हमने उसको यहाँ पे दिया और इस तरह से यहाँ पे इसने एक db अंडरस्कोर बैकअप डॉट एसक्यूएल की एक इसने फाइल बना दी है। जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी अगर मैं इस फाइल को खोल कर आपको दिखाऊं तो db अंडरस्कोर, सो ये कंप्लीट इसके अंदर जो भी डेटा है और उस डेटा के अलावा जो टेबल हैं स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, राइट। नाउ लेट्स डू दी वन एक्सरसाइज। करना क्या है कि हम टेस्ट करते हैं अपने डेटाबेस को कि हम डेटाबेस रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। सो रिस्टोर करने के लिए माई एसक्यूएल डैश यू यूजर नेम डैश पी डेटाबेस नेम और यहाँ पर हमने ग्रेटर देन का साइन, यहाँ पे हम लेस देन का साइन लगा के इसी सेम फाइल का नाम देंगे तो हमारा जो डेटाबेस है वो रिस्टोर हो जाएगा इस डेटाबेस के अंदर। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास एक्सीडेंटल डेटाबेस डिलीट हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है और उसके वक्त हमें अपने डेटाबेस को रिकवर करने की ज़रूरत है। सो फॉर दिस विल ट्राई इट आउट अनदर कमांड ड्रॉप टेबल्स की, राइट। सो ड्रॉप टेबल कमांड क्या करती है कि आपके पास जो ड्रॉप डेटाबेस है, ठीक है ना। सो ड्रॉप डेटाबेस की कमांड क्या करती है कि आपके पास से डेटाबेस ड्रॉप कर देती है, डिलीट कर देती है, ठीक है। सो ड्रॉप डेटाबेस की कमांड से आप अपना डेटाबेस उसमें से डिलीट कर देते हैं MySQL से। सो लेट्स ट्राई इट आउट। हम दोबारा से अपने MySQL के अंदर लॉग इन करते हैं, sudo mysql dash u root dash p, ओके। और अब अगर हम यहाँ पे करें शो डेटाबेसेस तो हमारे पास ये डिफरेंट डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट डीबी भी है। अगर हम यहाँ पे दें ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी कोलन, तो वन रो इफेक्टेड, एक डेटाबेस हमने डिलीट कर दिया। हम दोबारा से शो डेटाबेसेस करते हैं तो अब आप देखें तो वो उसमें से जो स्टूडेंट डीबी था वो डिलीट हो चुका है, राइट। स्टूडेंट डीबी का लेकिन हमने बैकअप ले चुके हैं तो उसको हम बैकअप से रिस्टोर करेंगे। अब हम सारा अपना स्टूडेंट डेटाबेस लॉस कर चुके हैं। सो विल डू एग्जिट क्लियर स्क्रीन।
So we make sure that the database has been deleted, and now let's suppose this is a new database and you would like to restore the database from the backup. हम अपने बैकअप से database restore करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक न्यू database create करना पड़ेगा जो कि blank database होगा। किसी और नाम से भी कर सकते हैं, create database, और हम कोई दूसरे नाम से हम एक डेटाबेस है स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। मेक श्योर कि पहले हमें स्टूडेंट डीबी के नाम से था, अब हम क्रिएट किया है स्टूडेंट इन्फो के नाम से। तो एक स्टूडेंट इन्फो के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। ब्लैंक डेटाबेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इफ आई गो इनटू दिस डेटाबेस, यूज डेटाबेस स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, सॉरी, यूज स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, एंड शो टेबल्स। तो कोई भी इसके अंदर टेबल नहीं है इस वक्त, राइट। सो विल डू दी एग्जिट फ्रॉम हेयर, ओके। और एग्जिट कर दिया और यहाँ से जाके हमारे पास डेटाबेस बैकअप फाइल मौजूद है, तो विल डू sudo एंड देन डू दी mysql dash u यूजर नेम रूट डैश पी, और फिर जिस डेटाबेस हमने नया क्रिएट किया है स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, और फिर लेस देन साइन के साथ जो हमारे पास बैकअप की फाइल हमने बनाई थी db अंडरस्कोर बैकअप डॉट एसक्यूएल, उसके साथ पासवर्ड पूछेगा, तो यूजर का पासवर्ड हमने एंटर किया एंड दिस इज डन। नाउ विल लॉग इन अगेन इनटू दी माई एसक्यूएल के अंदर हम लॉग इन करते हैं और यूज स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, स्टूडेंट इन्फो के अंदर हम चले जाते हैं, डेटाबेस चेंज हो गया। और अब यहाँ पर जाके हम चूज कमांड करते हैं शो टेबल्स। सो अब आप देखें कि इसके अंदर जो हमने रिस्टोर किया डेटाबेस, तो जो टेबल्स हम सारे डिलीट कर चुके थे, अब वो सारे बैकअप्स हमने इसमें रिस्टोर कर लिया है। सो इफ यू डू दी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो सारा रिकॉर्ड भी हमारा रिस्टोर हो चुका है इसके अंदर। So this is how we have to back up and restore the MySQL. This is important thing for us, and uh, this is important thing for us. And if we we would like to learn the more about our MySQL thing, so we can always go onto the internet and MySQL site dev.mysql.com, जहाँ पर जाके हम फर्दर इसके बारे में लर्न कर सकते हैं। So that's it from today's class. I hope you enjoyed it and learned it a lot. And if you have any question, please do comment on this, and I'll surely respond to your comments. Thank you very much.